लास्ट क्लास में हमसे एक MCQs में मिस्टेक हुआ था, मिस्टेक नहीं हुआ था लेकिन उसमें थोड़ा सा वो हमने मिस्टेक किया था उसमें, जिसकी वजह से आंसर गलत आ रहा था। उसको मैंने दोबारा रीचेक भी किया था लेकिन फिर भी वो आंसर सही नहीं आ रहा था, वो गलत आ रहा था। तो उसको आज हमने करने, उसके बाद हम फिर वो नेक्स्ट MCQs की तरफ आएंगे। ओके। अच्छा, ये MCQs हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ओके, अगर अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स किए हैं, दिस इज चैप्टर नंबर 4, 3 चैप्टर से इतने MCQs नहीं आते हैं जो टेस्ट होते हैं जितने इस चैप्टर से MCQs आते हैं। इस चैप्टर से काफ़ी MCQs आते हैं। ओके, तो इसी वजह से मैं इस चैप्टर को ज़्यादा टाइम भी दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, और आप लोगों के जो भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ मुझे उसमें बता दिया करें। नीचे कमेंट्स सेक्शन, लाइव चैट मैंने ऑन कर दिए हैं तो उसमें मुझे आप अपडेट कर दिया करें ताकि फिर वो हम जो भी कन्फ्यूजन आप लोगों का होगा तो मैं कोशिश करूँ कि इस क्लास के एंड में, लेकिन अगर इस क्लास के एंड में नहीं हुआ तो फिर वो मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों की जितने भी कन्फ्यूजन है उसको मैं दूर करूँगा। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके। अच्छा, इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के अभी जो FPSC के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ओके, आई थिंक 24 के 23 से उन्होंने अभी वो कर दिए, तो उसमें एक पोस्ट है जो कि हमारे फील्ड से रिलेटेड है, दैट इज़ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अगर उसकी तैयारी आप लोगों ने करवानी है या उसके लाइव क्लासेस करने हैं तो वो आप प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स हुए तो फिर हम उसकी तैयारी, वो लाइव क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे, तो उसके फिर वो उसकी तैयारी उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम करेंगे। ओके, उसमें ज़्यादातर जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं कवर कर चुका हूँ ज़्यादातर। उसमें मैं आप लोगों को बस होमवर्क असाइन करूँगा, आप लोगों की जितने भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको दूर करूँगा, और जो टॉपिक्स हमने कवर नहीं किया अभी तक इस चैनल में तो उसको मैं कोशिश करूँ कि क्लियर कर दूँ। ओके, उसके तो अभी आई थिंक 8 डेज़ नहीं, वो तो 23 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो उसके आई थिंक 10 तक आई थिंक डेज़ हैं, तो वो कुछ नोट्स हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगा। तो इंग्लिश के लिए क्या करना है तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगा। अगर आपने अप्लाई किया है उसके लिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें। ओके। अच्छा, वो MCQ नंबर 25 था। ओके, MCQ नंबर 25 की तरफ चलते हैं। Recording in progress. Recording stopped. सबसे पहले उसको करते हैं, उसके बाद फिर वो आते हैं 25। अच्छा, ये था दिस MCQs that is 2 resistor. Okay, 2 resistor, 1 resistor is given to you and you will need to find the second resistor. Okay, 2 resistor connected in parallel across a cell of negligible internal resistance use 4 times the power that they would use when in series across the same cell. If one of the resistance is 10 ohm, the resistance of the other is, so what you will do, you will need to like this statement that is given to you, the resistance, okay, of parallel, okay, like power in parallel, that will be equal to power in series, 4 times the power in series. Okay, use 4 times the power they have to use in series. Okay, so यहाँ पे हमारे पास जब पावर के फार्मूला क्या होता है कि V² डिवाइड बाय R के इक्वल होता है। Same over here, this will be V², 4V² divided by R. Okay, so over here like this is in parallel and this is series, so यहाँ पे हमारे पास 2 resistor, 1 resistor is 10 ohm, second resistor you will need to find that, so in series it will be R plus 10 हो जाएगा। okay, while in parallel it will be 10R divided by 10 plus R। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लो, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये V² तो V² के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा ऊपर 10 प्लस R आ जाएगा और नीचे आपका 10R आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 4 डिवाइड बाई R प्लस 10 आ जाएगा। सो नाउ व्हाट यू विल डू, यू नीड टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ऊपर आपका ये आ जाएगा R प्लस 10 होल स्क्वायर, दैट्स विल इक्वल टू 40R। अच्छा, अब इसको अगर आपने फर्दर सॉल्व करने तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाना है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने इसको वो उसके 3 मेथड्स होते हैं। ओके,
बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, एक आपका वो फार्मूला वाला मेथड होते हैं, ओके, और दूसरा मिड टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड होते हैं, ओके। तो वो सारे मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन किए ऑलरेडी, बट आप उसकी तरफ ना जाओ, आप यहाँ पे ऑप्शंस में देख लो। तो लाइक 10 को हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ इंस्टेड ऑफ आर यू विल पुट 10, तो 10 + 10 विल बी इक्वल टू 20, 20 स्क्वायर दैट्स विल बी इक्वल टू 400, ओके, दैट्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आर की जगह 10 पुट कर लो, सो दैट्स इक्वल टू 400। सो इट मीन्स दैट माई आर वैल्यू विल बी इक्वल टू 10। If my R value is equal to 10, then it will satisfy this equation. So option B will be the correct answer. Okay. ये लास्ट टाइम हम एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, इसको हमने नीचे लिखा था और 10R को हमने ऊपर लिखा था, तो हम इस दोनों कैंसिल कर रहे थे, तो उससे वैल्यूज नहीं आ रहे थे, वो मिस्टेक कर रहे थे, तो वो मिस्टेक यहाँ पे, दिस विल बी करेक्ट आंसर। ओके ओके, अब आ जाते हैं MCQs नंबर 31 से स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट टाइम वी डिड अप टू 30 MCQs। इफ़ यू वांट टू एक्सेस दैट वीडियो, ओके, तो वो आपको मिल जाएगा, वो आप यहाँ पे लाइव वीडियोस होते हैं, वो यूट्यूब पे पड़ी होती हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। Okay, MCQ number 31, that is three equal resistors in series across a source of EMF together dissipate 10 watt of the power. If the same resistors are connected in parallel across the same EMF source, the power dissipated will be, so we have three resistors, okay, हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं और तीनों रेजिस्टर जो हैं वो इक्वल रेजिस्टर हैं, ओके, और ऑल रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, और यहाँ पे जो पावर है वो कितना वोल्टेज सप्लाई जो है वो EMF लेट सपोज भी है, इस EMF के क्रॉस आपका पेयर हो जाएगा, 3 रेजिस्टर को आपने पेयर क्या करना है, इसी रेजिस्टर को आपने पैरेलल में कनेक्ट करना है, लाइक दिस, ओके। सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, in this case you need to find the equivalent resistor, okay. So in this case your resistance that will be equal to, in this case your equivalent resistor will be equal to, your R will be equal to, R series will be equal to 3R, and in this case your equivalent resistor will be equal to, like R parallel will be equal to R divided by 3, okay. So and as we know that the formula for power, that is P is equal to V square divided by R. So over here we have resistance that is equal to 3R, okay. So आपका ये क्या हो जाएगा, P will be equal to V square divided by 3R हो जाएगा, okay. And over here your power will be equal to, this is power in series, this is power in parallel, that will be equal to V square divided by R is R into 3 ऊपर चला जाएगा, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास we will need to find P V square, okay. This power 10 watt of power that is given to us, so this will be equal to 10, so your 10 multiplied by 3R will be equal to 30R will be equal to V square. So now you will substitute this value over here in this equation, so your power in parallel that will be equal to 30R, okay, यहाँ पे 3 आ जाएगा डिवाइड बाय R आ जाएगा, this R will cancel by this R, so your power that should be equal to 90 watt, okay. ये प्रैक्टिकली भी अगर आपने कहीं पे इस तरह करने, तो इस तरह की कैलकुलेशन आपने प्रैक्टिकली भी करनी होगी, सो इसमें ऑप्शन C will be the correct answer. Okay, next MCQ number 32, that is 2 flashlight electric incandescent lamp required 30 ampere each at 1.5 volt. If they are placed in series and connected to a 6 volt source, there must be a series, there must be in series with them a resistor of, okay, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 2 फ्लैश लाइट है, ओके, ये एक लाइट हो गया, ये दूसरा लाइट है, ओके, और यहाँ पे हमारे पास सप्लाई कितने है, दैट इज 6 वोल्ट, ओके। अच्छा, 1 एम्पेयर करंट 30 एम्पेयर है, तो इट मीन्स कि करंट सीरीज में तो दोनों में सेम करंट फ्लो होगा,
दिस इज 1.5 वोल्ट, दिस इज 1.5 वोल्ट। सो यहाँ पे देख लो 6 वोल्ट हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 वोल्ट यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं, तो 3 वोल्ट रहते हैं, तो वो आप यहाँ पे सीरीज में एक रेजिस्टर कनेक्ट कर लो, दैट विल बी इंटरनल रेजिस्टर, और 3 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे होना चाहिए। इसके क्रॉस करंट कितना जा रहा है, दैट इज 30 एम्पियर। तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई। सो माई वी इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू 30। सो हमारे पास 1 डिवाइड बाई 10 आ जाता है, विच इज इक्वल टू 0.1। सो 0.1 ohm resistor you will need, okay, and you should connect this over here, otherwise आपके ये बल्ब जो होते हैं हाई वोल्टेज सप्लाई की वजह से आपको वो जल जाएंगे, ओके। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट MCQs नंबर 33, that is a 100-watt bulb will give heat and light energy of. So actually the relation between power and energy is power is equal to energy per unit time, okay. So your watt is equal to joule per second. So in this case we can write it like 100 joule per second, okay. So option 1 will be the correct answer. MCQs number 34, that is electric supply is rated at 220 volt in a house. 11 bulbs of 11 bulbs of power rating 100 watt each are used. The rating of the fuse will be, okay, so you will need to find the rating of the fuse, okay. And in our house, like in Pakistan, in India, we have 220 watt, okay. And in a house, this name is used over here, so it means that the connection will be in parallel, okay. This will give me the information of parallel connection, okay. And in parallel we will have constant voltage, okay, that is 220 volt. So now we have 11 bulbs, okay. In different rooms we have 11 bulbs, and the rating of one bulb is 100 watt. So as we know that in parallel your equivalent resistor will be equal to this one, summation of all the resistor, like this, okay. So voltage is constant, so you write it like this. So it means that my power in parallel, that will be equal to summation of all bulb power, P1, इस तरह P2, इस तरह P3 up to P11, okay. So over here we have constant power, okay. So as we have constant power, so your total power, that will be equal to 100 times 11, that's equal to 1100 watt. So this is my total power, okay. This is my total power, and this is my voltage. So as we know that P is equal to IV, so my voltage is 220, so my current will be equal to this 0 will cancel by this 0. So 11 times 2 is 22, 11 times 1 is 11, so 5 ampere is there. So it means that you will use fuse having rating of 5 ampere, okay. So option 4 will be the correct answer, okay. अच्छा, फ्यूज़ के हवाले से हमारे पास अक्सर आता है कि फ्यूज़ जो होते हैं ना, इसमें like okay, that is next question. Excuse number 35. What is immaterial for a fuse? So immaterial means ke not necessary, okay. So for fuse, that is the correct answer is length, and this MCQ is repeated many times in many tests, okay. So काफ़ी DESCOS के जितने टेस्ट हुए हैं उसमें अक्सर ये MCQs रिपीट होता था। NTDC के टेस्ट में भी अक्सर ये रिपीट हुआ है, NTS जब वो कंडक्ट कर रहा था। तो ये हमारे पास काफ़ी रिपीटेड MCQs है। इममटेरियल मीन्स के गैर ज़रूरी, ओके। अच्छा, फ्यूज़ में हम क्या करते हैं, हम रेजिस्टिविटी को इनकाउंटर करते हैं, हम रेडियस को इनकाउंटर करते हैं, ओके। फॉर मेल्टिंग पॉइंट हम रेडियस को इनकाउंटर करते हैं, ओके। और लेंथ को हम इनकाउंटर नहीं करते, ओके। फ्यूज़ में लेंथ इतना ज़रूरी नहीं होता उसमें, ओके। आपने रेडियस को इंक्रीज या डिक्रीज करना है फॉर इट्स मेल्टिंग, ओके। मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली आपने इसके रेडियस को इंक्रीज या डिक्रीज, लाइक आपने उसकी थिकनेस को बढ़ाना है या कम करना है,
वो आपने मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम करते हैं, और वो रेडियस के थ्रू करते हैं, लेंथ के थ्रू हम नहीं करते। ओके, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं, और अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे तो वहाँ पे आपका एक्स्ट्रा स्पेस ये कवर करेगा। सो इन दैट्स वाई दिस विल बी करेक्ट आंसर। MCQs number 36, that is, by what percentage will the incandescent of a bulb decrease if the current drop by 2%? So last few classes में ये मैंने आपको बताया भी था कि what you will do, you need to remember this formula कि change in power divided by power, that will be equal to 2 times change in current। तो ये करंट डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपने वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी। सो वी हैव करंट ड्रॉप बाय 2%। So over here that should be equal to that should be equal to 4%. So in this case option B will be the correct answer. Okay, next MCQ number 37. Appliances based on heating effect of current work on। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लाइक इसमें हमारे पास जो हीटिंग इफेक्ट जो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट पे होते हैं। ओके, लाइक करंट का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में हो रहे हैं तो आपको हीटिंग इफेक्ट देगा, करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहे हैं फिर भी आपको हीटिंग इफेक्ट देगा। तो इट मीन्स दैट इट विल वर्क ऑन DC एंड इट विल वर्क ऑन AC एज वेल। ओके, इसमें एक और पॉइंट ये भी होता है कि हमारे पास जो हीटिंग का फार्मूला है दैट इज इक्वल टू I²RT। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख लो तो I में अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर लो, -4 एम्पियर करंट है, तो इसका स्क्वायर ले लो तो आपका पॉजिटिव ये 4 को बूस्ट कर लेगा और पॉजिटिव आपको आंसर देगा। अगर इसमें आप पॉजिटिव 4 पुट कर लो तो भी आपको सेम आंसर देगा, दैट शुड बी पॉजिटिव 16। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस दैट like in DC we encounter the average value, but in AC we are not encounter the average value because the average of AC is equal to 0. So in this case we are going to encounter the RMS value. So like in this case the heat which you will get from the RMS value of current, okay, that should be equal to the heat you will get from the same value of the current DC in DC। okay, like जो हीट आपको RMS वैल्यू ऑफ करंट दे रहे हैं सेम आपको वही करंट आपको लाइक DC वही DC करंट आपको सेम हीट देगा। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द RMS। ओके, लाइक आपके पास RMS करंट AC के केस में RMS करंट आपके पास 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो वही अमाउंट ऑफ हीट that like you can generate the same amount of heat by using 10 ampere DC। okay, so that is the definition of the RMS value। अच्छा, MCQ number 38, that is, two coil connected in parallel across 100 volt supply take 10 ampere from the line, the power dissipated in one coil is 600 watt, the resistance of the other is, so you will need to find the resistance of the other। okay, and two coils connected in parallel। okay, so let's suppose this is my one coil, so over here you have 10 ampere। okay, over here we have 600 watt and this is 100 वोल्ट। ओके, 100 वोल्ट सप्लाई है तो ये पैरेलल में तो आपका कांस्टेंट होगा। okay, the resistance of the other, so you need to find the resistance of this। okay, first of all we need to find this current। okay, actually this is 100 volt, this is also 100 volt। okay, but it is not necessary that your resistance will be same। okay,
So that's why I'm going to find the current. Like I'm not going to take the 5 ampere over here and 5 ampere over here, okay? Because this voltage is given to me, but this voltage is not given to me. If this is also given to you, like this is equal to 600 watt, then your current 5 ampere current will flow over here and 5 ampere current will flow over here. So I will need to find the current over here. So as we know that P is equal to IV. So my power is 600, my voltage is 100. So it means that my current will be equal to 6 ampere. Okay, so this current will be equal to 6 ampere. Over here you will have 4 ampere current. Total current is 10 ampere. So 4 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा. So now over here you will need to find the resistance. Current and voltage value is given to you. So your resistance, as we know that R is equal to V divided by I, and V is given to me, that is 100 divided by I is 4. So यहाँ से आपके पास 25 ohm आ जाएगा. So 25 ohm, option 1 will be the correct answer. Okay, next very important MCQ, that is 39. Okay, a 3-degree rise of temperature is observed in a conductor by passing a certain amount of current. Okay, if current through the conductor is double, the rise of temperature will be, okay, rise of temperature हमें given है, that is equal to 3 degree. Okay, and current, percentage amount of current, so this will be current. Okay, that's how this is 1, this will be also equal to 1. If current through the conductor is double, if current through the conductor is double, so it means that my I2 will be equal to 2I1. The rise in temperature, so it means that del T I will need to find it, del T2 I will need to find this. Okay, so as we know that my heating formula, that is heating is equal to I square RT, change in temperature. Okay, so over here I am going to keep this as a constant. So आपका H क्या हो जाएगा, that will be directly proportional to I square. So now I am going to take it again, H is equal to I square RT. Now I am going to keep this as a constant. तो आपका H क्या हो जाएगा, that is directly proportional to change in temperature. So now H is directly proportional to current square, and H is directly proportional to change in temperature. So can I write it like this? My I, yeah, you can say my temperature will be directly proportional to I square. Yes. Okay, so इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि del T2 divided by del T1, that will be equal to I2 square divided by I1 square. So del T2 divided by del T1 कितना है, that is 3 degree. और I2 कितना है, I2 is the double of I1, so ये आपका 4I1 हो जाएगा, नीचे आपका I1 square आ जाएगा. This will cancel by this, so your del T2, that will be equal to 4 times 3 is 12 degree. Okay, so in this case option B will be the correct answer. अच्छा, now ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के माइंड में कि हम काफ़ी लेंथी न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो ये एक्चुअली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी. सो काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आप मेंटली भी इसको सॉल्व कर सकते हो. ओके, और कुछ मेंटल मल्टीप्लिकेशन भी होती हैं, लाइक 99 टाइम्स 100, तो दैट इज़ 9900, या इस तरह कुछ होते हैं 99 टाइम्स 99, तो आपने 100 टाइम्स 100 करने, उससे फिर आपने 99 को माइनस करने, इस तरह के कुछ होते हैं मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम मेंटल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. ओके, तो वो उसके मेथड्स अगर आपने जाने फॉर सेविंग योर टाइम ड्यूरिंग सॉल्विंग दीज ऑल दीज MCQs. ओके, तो वो आप मेरे जो
बेसिक मैथमेटिक्स के प्ले लिस्ट है उसमें चले जाओ तो वहाँ पे आपको वो मिल जाएंगे। ओके, वो सारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे जिसमें मेंटल मल्टीप्लिकेशन मैंने किए हैं, तो वो मेथड्स आपको मिल जाएंगे। तो उससे आप काफ़ी लाइक विद इन सेकेंड आप उसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल दैट प्रोसेस, जो पूरा लेंथी प्रोसेस होता है। अच्छा, MCQ नंबर 40, ए हाउस इज सर्व्ड by a 220 volt line in a circuit protected by a fuse marked 9 ampere. The maximum number of watt is 60 watt lamp in parallel that can be turned on is, so you will need to find the number of lamp. Okay, and the watt of one lamp is 60 watt. Fuse is connected, that is 6 ampere. Okay, so it means that the current flowing that is 6 ampere. Okay, उसके बाद parallel circuit जितने भी होते हैं उसमें डिवाइड हो जाते हैं। 220 वोल्ट लाइन है हमारे पास। अच्छा, बिल्कुल आपने वैसे ही करना है। हमारे पास पावर किसकी इक्वल है, या हमने अभी फ्यू मिनट्स पहले कि पावर इज गुड आई वी। यहाँ पे पावर आपका टोटल पावर होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे फ्यूज जो होते हैं वो हम स्टार्ट में कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज जब वार्डर से सप्लाई आती है तो यहाँ पे हम फ्यूज को कनेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। ओके, तो फ्यूज में यहाँ पे मैंने सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास फ्यूज है, तो यहाँ पे मेरे पास पावर टोटल कितना होगा, कितना पावर आ रहा है वापडा से, तो आपका टोटल पावर जो हो जाएगा दैट्स विल टू आई वी, वी इज 220 और आई कितना है दैट इज 9 एम्पियर। सो माय टोटल पावर दैट्स विल टू 1980। okay, so now power, actually total power will be equal to n times 60 watt. This is in connected in parallel, तो हम क्या करते हैं सबको आपने ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने पैरेलल हैं वो हमारे पास दैट इज अननोन, एंड दैट इज द क्वेश्चन यू नीड टू फाइंड दैट। सो लेट्स सपोज दैट इज n। ओके, वी हैव n पैरेलल पाथ एंड ऑन वन पाथ वी हैव 60 वाट, सो इट विल बी n टाइम्स 60। अच्छा, ये पैरेलल में है तो इस वजह से मैं इसको n टाइम्स 60 कर रहा हूँ। अगर ये मेरे पास सीरीज में होंगे तो फिर आपने 60 डिवाइड बाई n करना है। ओके, 1980। So now you will need to find n, that will be equal to 1980 divided by 60। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0 टाइम्स 0 इज 0, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे। 3 टाइम्स 2 is 6, 3 टाइम्स 5 is 15, 3 times 6 is 18, 3 times 6 is 18, 2 times 1 is 2, 2 times 3 is 6, 2 times 3, so 33, option 1 will be the correct answer। okay, okay, अब क्लास को एंड अप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बाकी MCQs को कवर अप करेंगे। ओके, इफ यू एनी कंफ्यूजन देन यू कैन पुट दैट कंफ्यूजन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, जितने भी MCQs हमने किए हैं तो इसी वीडियो के कमेंट में आपने मुझे बताने। नेक्स्ट वीडियो के एंड नीचे आपने नहीं बताना कि लास्ट वीडियो में ये हुआ था और उसका क्या वो रीज़न क्या था, क्योंकि इस वीडियो के नीचे जो भी कन्फ्यूजन है आपने मुझे अभी करना है ताकि मैं आपको उसका अभी क्लास के बाद आंसर दे दूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।